Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve problem number 14 of Cash Book, Intermediate First Year Accountancy. Now let us move towards our problem. Record the following transaction in the books with cash, bank and discount column. So we need to record the transactions in the cash book. This is triple column cash book. So immediately after reading this, we'll draw the format of triple column cash book. This cash book consists of two sides. On the debit side, we need to draw 6 columns. Date, receipts, LF, discount allowed, cash, bank. Similarly, on the credit side, we need to draw date, payments, LF, discount received, cash and bank. Now let us move towards the 1st of April 2019. Cash balance and bank balance. ठीक है? So these both are our asset. Asset का हमेशा debit balance रहता. Directly after reading this, we'll move towards the debit side and we'll write the date 1st March 2019, and in the receipt we will write to balance brought down. What is the amount? Cash balance is 8,000 and bank balance is rupees 14,000. Done. Now let us move towards our next transaction, that is on 3rd April. Issued check to Rahul 1,450. Discount is 50. सो इशूड मीन्स आप चेक लिख के दे रहे हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे डिडक्ट होते, पैसे जा रहे हैं, पैसे गए तो क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना है. द डेट इज 3rd April 2019 एंड हियर वी विल राइट बाय, किसको दिया आप चेक? राहुल को. राहुल्स अकाउंट, द डिस्काउंट इज 50 एंड द अमाउंट ऑफ चेक इज 1,450. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, that is on 6th April, sales through net banking. What does this mean? This means we have sold our goods and the amount is received in our bank account. ठीक है, net banking के through payment हुई. So directly this means we have received cash in our bank account. तो अगर पैसे आए, we have to record on the debit side, receipt side record करेंगे. What is the date? The date is 6th April. 6th April 2019 and टू हम क्या करें? सेल करें, सेल्स अकाउंट and we have received through net banking. That means we need to enter the amount in our bank column. So what is the amount? The amount is rupees 2,800. 2,800. Then after that, withdrawn cash from bank 2,900. हम बैंक को गए, पैसे निकाले, विड्रॉ करे और कैश बॉक्स में, बिजनेस में हमारे लेके आके रख दिए. So whenever there is a direct connection between cash box and bank, contra entry exists. Contra entry होती कि immediately हमको journal entry ड्रॉ करना है. What is the journal entry of cash withdrawn? Cash account debtor to bank account will be the journal entry. So इसको गौर से देखो आप, ये journal entry में to किसके साथ है? To bank. So what we have to do? We have to write to bank account and by cash account, and in the LF column we will write C. Contra entry की identity है, C पहचान है, right? What is the date for this transaction? The date for this transaction is 9th. withdraw करें ना आप 9th and the amount is 2,900. First we'll write the date, that is on 9th April 2019 and 9th April 2019. 9th April 2019. Done. Always remember, as per the procedure of contra entry, what we have to do, अगर इधर बैंक दिखा, ठीक है, तो हमको अमाउंट इसका ऑपोजिट कॉलम में एंटर करना है. सो व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ बैंक? कैश. बैंक दिख रहा तो अमाउंट कैश कॉलम में एंटर करो, कैश दिखा तो अमाउंट बैंक कॉलम में एंटर करो. सिंपल एंड इजी. व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 2,900 in the cash column, and here we can see cash, so we need to enter in bank column. The amount is 2,900. Done. Now let us move towards our next transaction, that is received a check from Raju 1,450 in full settlement of his account 1,500. राजू के पास से पैसे 1,500 रुपये आना था, मगर आए कितने? 1,450. तो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ. So 50 is the discount and 1,450 is the amount, right? So चेक रिसीव्ड मतलब पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आते.
और वी हैव सेंट द चेक टू द बैंक, बैंक में हम वो चेक डिपॉजिट कर दिए। सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड। ठीक है, रिसिप्ट साइड मूव होना है। कई को बताओ हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। सो हियर विल राइट टू। अब ये चेक दिए कौन हमको? राजू। सो हियर वी नीड टू राइट राजू's account. The amount is 1450, and in the discount column we have to write 50. Done. What is the date? The date for this transaction is 11th, so we'll write 11 April 2019 in the date column. Now let us move towards the next transaction, and that is purchased through debit card. This means we have purchased goods and payment is made through debit card. तो हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे जाते, पैसे गए, so we have to record on the payment side. The date is 16th. So what we'll write? 16th April 2019, and in the payment side we have to record by purchases account, and the payment is made through debit card. So we have to enter the amount in the bank column. What is the amount? 2400 is the amount. Now let us move towards the next transaction, that is on 19th, paid cash into bank. This means we have deposited cash into bank. कैश किधर रखा हुआ है? कैश बॉक्स में। कैश बॉक्स ओपन करे, पैसे लिए, बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिए। सो व्हेनेवर देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कैश बॉक्स एंड बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री एग्जिस्ट। तो क्या करना है हमको? इमीडिएटली जर्नल एंट्री पास करना है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ डिपॉजिट? बैंक अकाउंट डेट आर टू कैश अकाउंट। सो ये जर्नल एंट्री में टू किसके साथ है? टू कैश। सो व्हाट वी हैव टू राइट? टू कैश एंड बाय बैंक। ठीक है, टू कैश इधर आ जाता, एंड इन लेफ्ट कॉलम वी नीड टू राइट सी, एंड बाय बैंक इधर आता ऑन द क्रेडिट साइड, बाय बैंक। What is the amount? And in the LF column we need to write C. Done. Now let us see the date and amount of this transaction. The date is 19th and the amount is 800. So what we have to do? In the date column we will write 19th of April 2019. Here also 19th of April 2019. 19th of April 2019. नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री का रूल ये है, अगर आप को इधर कैश दिखा तो अमाउंट बैंक कॉलम में एंटर करना है। अगर इधर बैंक दिखा तो अमाउंट कैश कॉलम में एंटर करो। यू नीड टू एंटर द अमाउंट इन द ऑपोजिट कॉलम। सो व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज ₹800. सो वी विल राइट इन ऑन डेबिट साइड इन द बैंक कॉलम। इधर कैश दिख रहा है इसीलिए हम बैंक कॉलम में लिख रहे हैं, राइट। एंड ऑन क्रेडिट साइड इधर बैंक दिख रहा है आपको, so you need to enter the amount in cash column, that is 800. Now let us move towards our next transaction, that is purchased machinery 4000. Purchased machinery ₹4000। परचेज करे तो पैसे बिजनेस में से जाते, ठीक है। एंड दिस ट्रांजैक्शन इज ऑन 24th April. So first we'll write the date on the payment side, 24th April 2019. And what we have purchased? We have purchased machinery. So here we need to write by machinery account. What is the amount? The amount is ₹4000. Sorry, the amount is ₹4000. Now let us move towards the next transaction, that is received cash from Shekhar 350, discount allowed 50. शेखर के पास से क्या आया? कैश। कितना? 350. So what we'll write? पैसे आ रहे हैं ना, we have to record this transaction on the receipt side to cash. Sorry, to ये कैश दिए कौन? शेखर। we have to record the giver's name. पैसे आए, ठीक है, ये दिए कौन? शेखर। So we need to record Shekhar's account. Discount is 50 and the cash is 350. What is the date for this transaction? 26th of April 2019. Now let us move towards the next transaction, that is on 28th, salaries
दिस इज अवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी पे द सैलरी, तो पैसे गए, come towards the payment side and record 28th of April 2019. Here we need to write by salaries account. What is the amount? The amount is rupees 650. Next, now let us move towards the last transaction, that is cash withdrawn from bank for personal use. Personal use मतलब owner is withdrawing cash for his personal use. जब कभी भी ओनर पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करेगा, वी हैव टू कंसीडर इट एज ड्रॉइंग्स। एंड इन एडिशन टू दिस पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक, ये तीनों में से एक भी वर्ड दिखा सो डायरेक्टली विल कंसीडर इट एज ड्रॉइंग्स। तो पैसे हमारे बिजनेस में से जा रहे हैं 2300, तो we will move towards the payment side. We'll write the date, that is on 31st April 2019, and here we'll write by drawings account A/C. Then let us observe this cash withdrawn from bank. तो बैंक अकाउंट में से पैसे जाते हैं हमारे, so we have to write here what is the amount. The amount is rupees 2300. 2300 is the amount. Everything is done. Now we need to do the total. Let us do the total of discount columns first. So the discount allowed total is 100 and discount received total is 50. अब कैश कॉलम को कंसीडर करेंगे. The total of debit side of cash column will be 8000 plus 2900 plus 350, that is 11250. 11250, and this is the total which is more than credit. तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों के टोटल्स को कंपेयर करना है, जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख देते हैं. तो 11250 इज मोर, इसलिए हम ये दोनों तरफ लिख रहे हैं 11250. एंड फ्रॉम दिस 11250 वी नीड टू सबट्रैक्ट 800, 4000 and 650. So the total will be the total of balance will be 5800. Now let us do the total of bank column. Here we can see 14,000 plus 2,800 plus 1,450 plus 800. So 19,050 is the total of bank column of debit side. यही टोटल ज़्यादा है, तो हमारा काम क्या है, जो ज़्यादा टोटल आ रहा है वो हम दोनों तरफ लिख देते हैं. ठीक है, डेबिट साइड भी आ गया और क्रेडिट साइड भी हमको 19,050 लिखना है. Done. Now what we have to do? We have to subtract all these amounts from this 19,050. 19,050 minus 1,450 minus 2,900. Sorry, minus 2,900 minus 2,400 minus 2,300. So the answer will be 10,000. ये बैलेंस है कहेगा बैंक कॉलम का 10,000. So इसकी डेट रहेंगे द डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज 31st April 2019. एंड हियर वी हैव टू राइट बाय बैलेंस C/D कैरी डाउन. बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी रहती, तो इधर से इन्हें इधर आ जाता फ्रॉम क्रेडिट साइड टू डेबिट साइड. द डेट विल बी द नेक्स्ट डेट. ठीक है, तो अगले महीने की पहली तारीख रहेंगी. व्हाट इज द नेक्स्ट? 1st of May 2019. एंड हियर वी नीड टू राइट टू balance brought down B/D. So what is the balance of cash? That is 5,800. And what is the balance of bank? That is 10,000. Done. From this we have completed problem number 14. In the next video we are going to deal with problem number 15. Thank you.